So which triangle first will takes bigger one and smaller one. So मुझे hypotenuse नहीं चाहिए. So only opposite and adjacent. You can take as tan. So I'm taking triangle ABD. So what is tan 30 is equal to opposite by adjacent. Adjacent is total add करना है, right? 20 plus x. Tan 30 you know already, right? 1 by root 3 is equal to h by 20 plus x. Therefore, we can write as h is equal to 20 plus x by root 3. Okay, first equation. Big triangle here. Okay. So two variables, two equations you have to find. Okay. Next one. Chor triangle le lo. Triangle ABC. I'm recording. हाँ. So क्या होगा? Substitute करना two equations. Substitute this in this and find the value of x and y. X and h. Till answer. X equals to 10 and h equals to 10 root 3. Yes, correct. Just substitute the value of h here. So क्या होगा? H के जगह में root 3x is equal to 20 plus x by root 3. So root 3 into root 3, 3x minus x equal to 20. So 2x equal 10, 20, x equal 10. Now substitute here. So h is equal to x के जगह में 10 लगाए तो 10 root 3. We got the height of the tower and width of the canal. So आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ड्रॉ करना सीखो, बट इसमें डायग्राम दे दिया, लकीली यू कैन गेट द थिंग. चलो नेक्स्ट वन. चलो you got ये वाला. Yes. Next. Done सबका. Next. हाँ, now ड्रॉ करेंगे. From the top of a 7 meters high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degrees. Okay. Here building is there, tower also is there. Solve करो. Diagram draw करो. Sir, I didn't understand how to draw the diagram. ट्राई करो. दो ड्रॉ करने का, कैसे ड्रॉ करेंगे बोलो. He told from a top of a 7 meters high building, the angle of elevation of the top of the cable tower, मतलब building है, tower है, is on the ground. Okay. Now eyes किधर है? He is seeing from where? This 7 meters दे दिया ना building का. The angle of elevation of the top of the cable tower. Now eyes is on the इधर से top of the cable tower is seeing. Angle of elevation means the line of sight and horizontal के बीच में angle is 60 degrees they given, 60 degrees they given. Now what is saying? Angle of depression of the foot. Depression means of the foot of the tower. So from either eyes say he is seeing this line is called line of sight
एंड हॉरिजॉन्टल, आई से ओनली हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने का, दैट एंगल इज हाउ मच, 45 डिग्रीज, राइट. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब पूरा हाइट है ये हाइट. यू टेल मी, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस 7 में दिस ऑल्सो 7 मीटर्स, ये h मान लो. नाउ हाइट ऑफ द टावर में टोटल h प्लस 7 फाइंड करने का. डायग्राम आ गया तो इजी. देखो, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, दिस वन ट्राइंगल, नेम इट A B C D. नाउ टेक टू राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड सॉल्व. मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, गो फॉर tan. ऑलवेज साइन कॉस tan में ही जाने का, डोंट गो फॉर सीकेंट कोसेकेंट मत जाओ. नो करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ द टावर, मतलब h फाइंड करके h प्लस 7 करो, विल गेट द आंसर. सीधा यूज tan 60 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. एडजेसेंट को यू कैन टेक एज x ले लो, एंड दिस ट्रायंगल आल्सो tan ले लो, एंड इक्वेट, यू गेट द आंसर. टेकिंग ट्रायंगल ABC, मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए. whenever hypotenuse not required, don't go for sin and cos, tan चाहिए. So tan 60 is equal to opposite by adjacent is x. So tan 60 is root 3, x is equal to h. First equation. Diagram draw कर दिया, खलास, done. Next, this triangle CBD. Okay, tan 45 is equal to opposite by adjacent x. So tan 45 is 1. So x equals 7 we got. Now substitute this in this 7 equation. root 3 only, no? H equals, substitute 2 in 1. X के जगह में 7 लगाया तो h equals 1 root 3. So what is the height of the tower? Height of the tower is 7 root 3. इधर से इधर तक कौन, राइट, ये भी 7 भी ऐड करने का. तो 7 plus 7 root 3. So 7 times of 1 plus root 3 is the height, meters. On marks आया आपको, मान्या and Hasika, you got marks maths का? Sir, maths, my teacher hasn't corrected yet. Okay, So she मान्या आपका हो won't गया? be- You got marks? And me and Hasika are in the same section. Okay, not good, not correct. Okay, chalo. I got this one, 7 times of 1 plus root 3. जान में भाई साइलेंट टुडे, मौन रहता, बात करो. गाटा? यस, चलो. सिद्धार्थ अंडरस्टूड, राइट सिद्धार्थ? हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, गो फॉर tan. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करना सीखो थोड़ा, देन समझ में आएगा. As observed from the top of 75 meters high lighthouse from the sea level. एक lighthouse है from the sea level से. Okay, this is a lighthouse. He is seeing the observed from the top of the 75 meters. 75 meters का height of the lighthouse. Okay. From the sea level, the angle of depressions. Depression means I told you line of sight and horizontal below रहने का. Okay. The angle of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Okay. From top से एक ship है. He is seeing, this is the angle of depression. Angle of depression is the line of sight, and I say you draw one horizontal line. This angle of depression first ship ka is 30 degrees. This is the angle of depression. Okay. Now देखो, these two are parallel and this is a transversal. Alternate angles are alternate angles, right?
So this is also 30 degrees. So first ship ka he is seeing. Again, beside me one more ship is there. Okay, he is seeing from there same line of sight and horizontal line के बीच में angle is angle of depression दूसरा कौन सा ship 2 का दिया है? They given as 45 degrees. 45 degrees. Okay, and this is alternate triangles. This is also 45 degrees. Okay, A, B, C, D. Diagram again. Now what is saying? Determine the height. What is it? No, find the distance between two ships. Distance between two ships means this one. You can take as x from here to here. You can take as y. Two variables, two equations, two right angle triangles. Karo? No. Now to take the bada triangle ले लो, छोटा triangle ले लो and solve. Either be hypotenuse not required for us, tan you can use. So bada triangle ले लो and छोटा triangle ले लो. Triangle 150 root 3. 150 root 3. Yes, sir. No. You trying to find x or y you found? X is 75 root 3. 75 root 3 x. No wrong. No, okay, so y is root 3. हाँ x है मुझे. So 75 root 3 minus a. By adjacent is x plus y. So tan theta is 1 by root 3 is equal to 75 by x plus y. So x plus y is equal to 75 root 3. First equation. Now second equation. किसको आया आंसर? Is x root 3? x is root 3 है इतना छोटा है 1 मीटर डिस्टेंस में एक्सीडेंट हो जाएगा इतना छोटा है तो. ओके नाउ सेकंड ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल लेंगे. ट्रायंगल ABC. ये छोटा ट्रायंगल. ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल लेने का राइट. सो tan 45 is equal to opposite by adjacent 75 by y. So tan 45 is 1, y is equal to 75 meters. Now substitute this in this. So x plus 75 is equal to 75 root 3. Therefore x is equal to 75 अगर मैं कॉमन लूंगा root 3 minus 1 is answer. 75 times root 3 minus 1 is answer. कुछ नहीं करो, डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो two right angles, two equations and substitute will get the answer. Yes. Next one diagram दिया है, स्टार मार्क भी लगा दो. नेक्स्ट वन 14th वन. बिकॉज हाइट इज गिवन. हाइट दिया तो कभी भी केयरफुल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हाइट का. ओके सो व्हाट इज सेइंग कॉपीडा हेलो सीधा ट्राई डायग्राम ड्रॉ करके ट्राई करो.
So here also 1.2 meters tall the balloon. Initially, he is telling how much distance the balloon traveled. How much distance the balloon traveled. Same diagram draw करो. ऐसे it is 88.2 meters. He's telling find the distance between the two things. मतलब ट्राई करो. ये total height is 88.2 means ये height का separate करना है, right? This height is 1.2, right? 1.2 separate करना पड़ेगा कभी भी. So we want this height on, right? So 88.2 minus 1.2 is 87. Very important. This one you have to put 87. Now solve. Two right angle triangles, two equations. Try करो. Distance x चाहिए, that's it. इसका चाहिए तो y ले लो. This one. Two right angle triangle. This one triangle and this one right angle triangle. बड़ा right angle triangle, छोटा right angle triangle. So I got like a huge distance. Yeah, tell answer. I got like 174 something. 174, no wrong.
2 right angle triangle. First one Sir? बड़ा triangle या छोटा triangle या? क्या tell me, Viraj? Sir, huh? Answer. No, not the answer, sir. Between the second balloon point, Hmm. yeah. No, the previous one, the one on the Okay. left. That will also be 88.2 meter only, no, the height. This is same only. 88 point. Same No, 87 only. Why 88.2? See, top to bottom नहीं लेने का. Because we are taking this triangle, right angle triangle, right? 87, 87. दोनों 87 only. Okay. Total mistake क्या? Yeah. Sir, x plus 5 would equal to 87 root 3. X plus y is equal to 87 root 3. Okay, first equation. Next. Yeah. Second equation, I got y equals to 87 by root 3. Okay. Substitute करो. मुझे x चाहिए ना? Distance between two balloons है. Substitute and bring all one side. You'll get the answer. See, tan 30 is equal to opposite by adjacent, x plus y. So 1 by root 3. So x plus y is equal to 87 root 3. First equation. Next one. Second equation. Tan 60 is equal to 87 by y. 87 by y. So y is equal to 87 by root 3. इधर तक आ रहा है. But मुझे Yeah. x चाहिए. How to find linear equations? Linear equation in two variables. क्या करेंगे tell me? X plus y is this much. Y is this much. So how to find x? I got 87 root 3 minus 87 by root 3. 87 common ले लो. So root 3 minus root 1 by root 3. Okay, LCM ले लो. You get 1 minus 1. Wait, what? Sorry. सिंप्लीफाई करके रेशनलाइजिंग करके फाइनल आंसर चाहिए. Sir, is it 58 root 3? Yes, perfect. Good. 58 root 3 is answer. Try करो. चलो. Yeah, substitute this y value. So x plus 87 by root 3 is equal to 87 root 3. कितना है आ जाएगा? x is equal to 87 अगर मैं कॉमन लूंगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3. नो सॉल्व करो. एलसीएम ले लो. विराज आंसर 59.8. 59.8. Yeah. You simplified root 3 also. Yeah. Why they told anything? Root 3 तक छोड़ो भाई. 59.8 root 3. Like that. ऐसे रंग भाई 59. हाँ से क्या बोलो आंसर? रूट 3 Root ये 3. तक आया. Yeah, I root got 3. the So x equal to LCM लेते root 3 into root 3 is 3. 3 minus 1 is 2. Yeah. 87 into 2 by root 3. Okay. So into root 3 into by root 3 करो. So 3 हो जाएगा. So 87 into 2 root 3 by 3. 3 will go up. So 3 2 Yeah. is 6. 3 9 27. So 29 into 2 is 58 root 3. Okay. ये दोनों तो आ रहा है you're getting, but substitution में इधर wrong कर रहा है. वो ऐसे करो. And last one is star mark लगा तो very very important. एग्जाम में बहुत बार रिपीट होगा and difficulty वाला. difficulty वाला means nothing but आपको speed distance का relationship मालूम है ना? Speed equal distance by time मालूम है ना? वो यूज करना पड़ेगा. का बेटा जाने वाला छोड़े वाला. हाँ लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट देखो. A straight highway leads to the foot of the tower. Okay, एक टावर है. एक टावर है. एक straight road. Okay. A man standing on the top of the tower. उसका कुछ काम नहीं है.
man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degrees. He is observing from here से ice is on the top में एक car को angle of depression, right? So line of sight and horizontal line. Angle is how much? They given as 30 degrees. And this is a 30 means this is also 30 degrees. एक right angle triangle तो आ गया आपको. Okay. Which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. Very important. At uniform speed. Uniform speed is nothing but constant speed. Okay. 6 seconds later. So it's coming. 6 seconds later. मान लो the car reaches up to here. मतलब मान लो initially time t equal 0. Initial time is t equal 0 ले रहा हूं. After 6 seconds के बाद t equal 6 seconds. इधर तक आया. Okay. The angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Same way from here say, again I'm seeing here, angle of depression is line of sight and horizontal is 60 degrees. If this is 60, this is also 60. देखो second right angle triangle also आ गया. He is telling, find the time taken by the car to reach the foot of the tower. इधर से इधर तक time कितना है? From here to here कितना time में reach होगा? Okay. A, B, C, D. मुझे इधर से इधर तक टाइम चाहिए बोले तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट? मतलब डिस्टेंस मतलब बीसी फाइंड करने का, आपको फाइंड पैसे क्या फाइंड करने का, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस इज बीसी बाय स्पीड वी हैव टू फाइंड फाइनली, देन ओनली विल गेट द आंसर टाइम. ओके, डिस्टेंस ऑफ बीसी नॉर्मल मेथड से करेंगे, बट स्पीड इधर से नहीं मालूम. स्पीड आपको क्या करेगा, ये इसका स्पीड फाइंड करो. सिंस इट इज यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड यू विल यूज हियर टू गेट दिस टाइम. ओके, यूनिफॉर्म स्पीड है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करने का, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशन फाइंड करो. ए एच ले लो, हाइट नहीं दिया ना, एच. हाँ, नाउ ट्राई टू फाइंड बड़ा ट्रायंगल लेके सॉल्व करो एंड छोटा ट्रायंगल लेके सॉल्व करो. फाइंड बीसी, बीसी फाइंड करो पहले. इधर से इधर तक इफ यू नो डिस्टेंस, सीडी आ गए तो टाइम मालूम है, यू कैन फाइंड द स्पीड फ्रॉम दैट. हाँ, ओके. सो मुझे ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो. मुझे बीसी चाहिए एंड इसका स्पीड चाहिए. ये स्पीड, इधर से स्पीड आ गए तो ये यूज करेंगे. चलो, सो ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी. सो हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए. tan 30 degrees is equal to opposite by adjacent, h by x plus y. Tan 30 is 1 by root 3 is equal to h by x plus y. So x plus y is equal to h root 3. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन. इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स आएगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा. चलो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो एक बड़ा ट्रायंगल का हो गया. नाउ मुझे ये भी ले लो, ये छोटा ट्रायंगल ले लो. ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 degrees is equal to opposite by adjacent, so h by y, right? So root 3, so h is equal to y root 3. Second equation. Okay, मुझे आपको x फाइंड करो. फर्स्ट फाइंड h, x फाइंड करो, आपको समझ में आएगा. सो फर्स्ट इक्वेशन x plus y is there. सेकंड में from this y is equal to how much? Y is equal to h by root 3. ये सेकंड इक्वेशन ले लो. Okay, now substitute this y in this and find x. पहले x step x find करेंगे, because x is nothing but distance. Distance time मालूम है, speed you can find from this. Okay, चलो substitute करो. y इधर y substitute करते कितना होगा? So x plus h by root 3 is equal to h root 3. X is equal to h root 3 minus h by root 3. So 3h minus h is 2h by root 3.
देखो इधर डिस्टेंस आ गया, x इज द डिस्टेंस, इज द कंसिडर। आपको टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, टू इक्वेशंस बनाया, आई एम ट्राइंग टू फाइंड x, दैट्स व्हाई y लेके इसमें सब्स्टिट्यूट किया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ x. x is nothing but distance one, right? Distance. Now time also you know, time is how much? 6 seconds, right? So you can find speed. Speed is equal to distance by time. So distance is 2h by root 3 by time is 6. So reciprocal होता 2h by 6 root 3. So 2 3 is 6. h by 3 root 3 is a speed. Clear Shuda? Speed you got. See why यूनिफॉर्म स्पीड बोला, इधर स्पीड आ गया तो बिकॉज टाइम मालूम है, फ्रॉम हियर टू हियर टाइम ओनली वी नो, दैट्स व्हाई वी फाउंड x. सो डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, वी फाउंड द स्पीड फ्रॉम दिस डेटा. एंड सिंस इट इज ए यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्पीड सेम ऑन, राइट? इधर सर्च करेंगे. ओके, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस bc कितना था, bc इज y ऑन, राइट? y इज h by root 3 बाई स्पीड कितना आया, h by 3 root 3. So reciprocal क्या तो क्या आएगा, h by root 3 into 3 root 3 by h. So h is cancel, root 3 to cancel, 3 seconds. Very important question, 3 seconds आ गया. तो आपको मतलब ये फाइनल एग्जाम टाइम तक आपको हर पेपर में आएगा क्वेश्चंस ये वाला. यू रिमेंबर 3 seconds सारा बोल के आंसर. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट. Understood any doubt? We found distance x, we know time, we found speed from this data. Khatam. From here to here we have to find time. Time is equal to distance, this is nothing but y on, right? bc is nothing but y by speed, right? So y we got already h by root 3. I use h by root 3 either. By speed I found from this data, I found 2h by root 3. I substituted here. कितना था? Substitute किया तो कितना होगा? Speed how much you got here? Speed is h by 3 root 3. I substitute here h by 3 root 3. Then we got 3 seconds. Understood? Haska understood? Yola? Yes, sir. Yeah. So probability will be done easily. कुछ नहीं है. So 4 chapters left for us maths में.